a lot of celebration in the streets as news is trickling in that KP Sharma Oli has resigned. But of course, the protests are continuing, and it doesn't seem like it's going to end anytime soon. Hi, my name is Udit Hinduja, and I'm reporting for ThePrint from Kathmandu in Nepal, where the anti-corruption protests are in full swing. There is a lot of anger and resentment over here amongst the public, anger towards politicians, towards greed, towards nepotism, and it's all overflowing in the streets of Kathmandu. What you can see behind me is essentially a group of people who have kind of blocked the road. There's a curfew in this area. There are curfews in multiple areas, but people have broken those curfews. Yesterday, at least 19 people were shot and killed by riot police. There are still riot police over here, but now protesters have increased in number. I'm essentially on the road that goes towards the international airport. Protesters are at that point as well, and we'll show you visuals of that. But essentially, there is a lot of anger, and the Nepalese public wants the international bodies and people outside Nepal to know that this isn't a social media protest. This is a protest against corruption, against a rotting political system, against a political class that they believe have taken advantage of the people, have not delivered on any of the promises. After Nepal transitioned into a democracy in around 2006, there were a lot of expectations, but none of those expectations have been met. The main reason why people are getting angry in Nepal, तो ये सोशल मीडिया से कोई रिलेटेड नहीं है. इट्स ऑल अबाउट करप्शन. ओके, तो ये करप्शन के लिए था. जो कल 8 सितंबर को सांसद भवन में नेपाल के काठमांडू में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उन लोगों ने क्लियरली कहा था कि ओनली 28 से बिलो जो है जे सिर्फ वो ही जाएंगे. तो हम लोगों ने सब ने वो फॉलो किया. हम लोग नहीं गए कल के प्रोटेस्ट में, हम लोग नहीं गए थे बिकॉज हम लोग 28 से ऊपर है. ठीक है, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से, बच्चे लोग गए थे, बच्चे 8 क्लास में जो पढ़ते थे, 9, 11, 12, कितने होंगे वो 17-18 साल के. उन लोगों को तो उतना आंदोलन के बारे में कुछ पता भी नहीं है. व्हाट इज प्रोटेस्ट, दे डोंट नो. दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि उन लोगों का आवाज पहुंचे वहां तक. वो लोग क्या चाहते हैं, वो बस सुनाना चाहते थे, अपने बात रखना चाहते थे. लेकिन वो लोग बहुत पीसफुली कर रहे थे, क्योंकि हम जनता है. हमारे पास क्या है हमारे पास? ना हमारे पास तोप है, ना बंदूक है, ना कोई गोली है, कुछ नहीं है. सिर्फ है एक आवाज है. हम लोगों के पास आवाज है. तो वो लोग गए थे सांसद भवन के सामने, तो उन लोगों ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया था. 11 बजे तक बहुत अच्छा चल रहा था. सब लोग हंस रहे थे, अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे थे. जैसे 12 बजा, उसके बाद दे आर स्टार्टिंग फायर. उन लोगों ने शूट किया है बच्चों को, एकदम छोटे छोटे बच्चों को. किसी को हेड शॉट दिया है, किसी को हार्ट पे उन लोगों ने गोली मारा है. और कल तो इतना त्रास, मतलब तो क्यों एंग्री नहीं होंगे? किसी के बच्चे गए, आज उनके बच्चे गए, तो हम कैसे मान लें कि हमारे बच्चे भी सेफ है इस देश में? कैसे मान लें? अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, अगर यूथ आगे नहीं आएंगे, और अगर हम लोग हमेशा डर के घर पे रोते रहेंगे, तो कब बदलेगा नेपाल? कब होगा? कौन सुनेगा? उसको हम ही लेके आए थे, तो उसको हम ही निकालेंगे. अगर हमारे बच्चों के लिए ये कंट्री सेफ नहीं है, तो क्यों नहीं करेंगे हम लोग? गुस्सा इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने कहा था पीस प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उन लोगों ने शूट किया. क्यों किया? क्या गलती थी उस बच्चे की? नेपाल के जनता इसलिए एंग्री है क्योंकि उसने शूट किया बच्चों पे. ये नहीं कि नेपाल में फेसबुक बंद हो गया. फेसबुक आया कितना हुआ? क्या पहले फेसबुक के बगैर लोग नहीं रहते थे क्या? सोशल मीडिया क्या पहले से था? नहीं था ना. कुछ भी नहीं है. सिर्फ ये न्यूज डाली है कि नेपाल में हम सब लोग एंग्री है क्योंकि उन लोगों ने शूट किया, बच्चों को किया, धोखे से किया, जबकि जनता के पास कुछ था भी नहीं. हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है. निहत्थे के ऊपर उन लोगों ने गोली मारा है. इसको आप बढ़ावा दीजिए कि हम लोग सेफ नहीं है. नेपाल में कोई भी सेफ नहीं है. हम लोग घर पे भी सेफ नहीं है. घर घर पे जाके वो लोग मार रहे. एम्बुलेंस पे मरीज को रखने के जगह नेताओं को रख के
अंदर से गोली मार के वो लोग भाग रहे हैं, तो क्या करें हम लोग? बैठ के देखते रहे? इतने सालों से तो देख ही तो रहे। अब तो करना है ना, कुछ करेंगे तो तभी ना, कुछ करेंगे तो तभी ना हम लोग इसको चेंज कर पाएंगे। आज बच्चे को मार दिया, कल हम लोगों को मार देंगे। अगर नेपाली नहीं रहेगा तो वो लोग किसके ऊपर शासन करेंगे? किसके ऊपर वो लोग करेंगे? इतना पैसा खाते, कितना खाओ, वो भी बोलते खाओ, लेकिन कुछ तो करो यार। आप सड़क देखो, हमेशा वैसे प्लेन देखो, उतना ही दुर्घटना होता है। नेपाल में जितना दुर्घटना होता है ना प्लेन, वहां पे दुनिया में किसी भी देश पे नहीं होता है। कहीं पे भी सेफ नहीं है। रास्ते से जाएंगे, गाड़ी जाता है त्रिशूली पे, ऊपर से जाएंगे, कब पहुंचेंगे, घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वो भी नहीं पता। तो एंग्री, इस बात को हाईलाइट कीजिए कि आप नेपाल में सब लोग एंग्री है क्योंकि कल शूट हुआ था बच्चों के ऊपर, पीसफुली प्रोटेस्ट बोल के उन लोगों के ऊपर शूट हुआ था, उसके वजह से आज सब लोग आए हुए हैं। थैंक यू। Social media kind of helped people to expose a lot of these politicians and their children who really are flaunting their wealth and going for these expensive vacations and luxury holidays. And the clampdown on that was kind of the straw that broke the camel's back, so to speak. So it was just the kind of trigger that you know, the spark that created the fire. But deep down, people are just angry about the corruption over here. And that's what they want the international community to know as well, that that at the end of the day, this is not a social media protest. Basically, this protest is like it started yesterday with the Gen Z generation, but now the protest is like mainly led by Gen Z generation and also as well as the older people of Nepal. So our main concession is like there should be some criminal procedures so that they can be held accountable. So thank you, Jai Nepal. There is immense resentment against KP Sharma Oli, and a lot of his ministers. People over here have been chanting against him and against his party. Some people who've been protesting have told me that while of course earlier the protests were just primarily limited to Gen Z, now a lot more people are coming out and protesting. There's a lot of anger and resentment towards political parties and towards the government. And it seems like this protest isn't going away. It seems like a big pivotal watershed moment in Nepalese history.